Hello children, good morning. How are you all? I hope all of you are fine. कल हमने क्या सीखा था? स्वर ई. So let us revise स्वर ई with some pictures. ई. ई से इडली. ई से इमारत. ई से इमली. ई से इंजन. ई से इलायची. ई से इत्र. ई से इंद्रधनुष. चलो बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी बच्ची ईला की कहानी सुनाती हूँ. बड़ी सी है एक इमारत, रहती उसमें ईला है. खाती है वो खूब इमरती, प्यारी उसको इमली है. खड़ी है ईला बारिश में, देखती वो एक इंद्रधनुष है. खेलती है वो खूब खुशी से, प्यारी उसको इडली है. ई से इमारत. ई से ईला. ई से इमरती. ई से इमली. ई से इडली. और ई से इंद्रधनुष. Now let's write स्वर ई in Hindi notebook. Let's start. Standing line, C curve, touch the second blue line, reverse C, touch the third blue line, go little bit up, make a small circle, slant line. Slant line should not touch the pink line, Shiro Rekha. Standing line, C curve, touch the second blue line, reverse C, touch the third blue line, go up, small circle, slant line, and Shiro Rekha. Standing line, C curve, touch the second blue line, reverse C, touch the third blue line, go little bit up, small circle, slant line, and Shiro Rekha. Standing line, C curve, फिर उल्टा सी करेंगे, go up, make a circle and slant line, Shiro Rekha. Standing line, C curve, reverse C, go up, make a circle, slant line, Shiro Rekha. Standing line, C curve, reverse C, go up, slant line and Shiro Rekha. We have to complete this page like this. Okay children, we are done for today. Bye.